जय श्री कृष्ण राम राम सीताराम मित्रों। तो केम छो? आई होप के बधा मित्रों मस्त अने मजामां छो। तो बधा मित्रों स्वागत है आजना आपणा नवा विडियोनी अंदर। विडियो शेनो छे तमने थंबनेल उपरथी ख्याल आवी ज गयो छे। तो ए आपणे उतारीने लाव्या तमने बतावुं आहीं पण। तो एनी आजे रेसिपी बनाववानी छे एकदम मेकेनिक नवी जे रीते आपणे बनावी नथी। तो तमे जोई शको आपणे तमने बेक केमेरो करीने पण बतावशुं। तो जरूर विडियोमां बीना रहेजो ने नवा मित्रो आव्या होय तो चेनलने पण सब्सक्राइब करी नाखजो। हमણાંથી क्या कि थोड़ा लग्ननी सीजन चालू है એટલે પાછા क्या कि એમાં વ્યસ્ત થઈ એટલે આપણા વિડીયોથી થોડાક લેટ આવે તો માફ કરજો। તો ચાલો તમને બેક કેમેરા કરીને આ વસ્તુ છે એ બતાવી દે એની તૈયારી પણ ચાલુ છે એ પણ બતાવી દે જેમાં જે બધી વસ્તુ કરવાની હોય છે એનો મસાલો પણ તૈયાર કરવાનો છે તો એ બધી વિડીયોમાં તમને જોવા મળી રહેશે। તો જરૂર લાસ્ટ સુધી બિના રહેજો। સૌથી પહેલાં આપણે તમને બેક કેમેરા પર જે ગુંદા ઉતારીને લાવ્યા એ આપણે તમને બતાવીએ। तो जो मित्रों आ आप गुंदा उतारी ने लाव्या तो आनु आपणे तमने बात करीए अत्यारे रेसिपी बनाववानी। तो आने थोड़ा गरम पानी में अत्यारे एटले के उकारवाना है। बहु गरम तो नहीं पण मीडियम। तो एमां पहेला पानी में आपणे बे फाकोड़ करी लेशुं। पछी अंदर जे आमां गोटली होय ए निकाळी ने एमां मसालो करवानो तो ए पण तैयार करवानो है। तो पहेला आने थोड़ीक वार आपणे बाफवा माटे मूकी दे। अति बहु नहीं मीडियम थोड़ोक कहेने के आम थई जाय गोटली निकळे एवा एटले। तो एमां जे चिकाश होय ए जती रहे एटला माटे। तो अत्यारे बाफवा माटे मूके है बा। तो जो मित्रों हवे आपणे मसालो तैयार करवानो है एनुं काम स्टार्ट थई गयुं। तमने बतावुं नजीक जईने। आपणे जे मसालो तैयार करवानो है ने एमां जो आ जे गांठिया आवे भावनगरी एनो आ रीते थोड़ो भूको करीने नाखવાનો। आपणे मिक्सर नथी एटले आ रीते करीए। मिक्सर होय तो बेस्ट रहे परंतु आ देसी एकदम कहेवाय ने कि मिक्सर ने तो अत्यारना साधन बाकी आपणे खांडवानुं तो जूनुं एटले आपणे आ रीते करी अने एकदम झीणो भूको करीए। ने जो तमारे गांठियानो जे मसालो है तैयार न करवो होय तो जे चणानो लोट आवे एने थोड़ोक कहे ने कि बहु नहीं परंतु मीडियम थोड़ोक शेकी लेवानो ने एनो पण करी शकी। तो आपणे गांठिया यूज कीधा है तो आ रीते भूको करी लेशुं। ने पछी हजी एमां लसणनी कर्युं है एनो पण थोड़ोक पेस्ट करीने उमेरशुं। ने बीजा जे मरचुं हळदर धाणा पाउडर ने ए बधुं तो ए बधुं ज्यारे आपणे एड करशुं त्यारे बतावशुं। तो फाइनली मित्रों जो आपणे गांठिया हता ए खांडी लीधा ने हवे एमां मसालो एड करवानो। तो हळदर एड करी दीधी ने आ बाजु है लसणनो थोड़ोक पेस्ट ए रह्यो ए बधुं तो नहीं आमां नाखी तो आपणे शाक वघारी एमां एड करशुं। लीला धाणा एटले के कोथमरी आमां अत्यारे एड करी देशुं। आ बाजु है जीरा पाउडर तो ए पण अडधो ज आमां एड करशुं। अडधो आपणे शाकमां एड करशुं शाक बनी जाय त्यारे उपर। तो जो आटलो अत्यारे जीरा पाउडर एड करी दीधो ने थोड़ोक आ लसणनो पेस्ट तो मरचुं हळदर मीठुं ने आ बधाय मसाला तमे जोई शको। तो जो हाल बाजू बा है मीना गुंदा भरवा ने बोन है गुटली काटे है एटले के गुंदा में जे गोटली होय ने आ बाजू जे मसालो आपणे तैयार कर्यो ते बा है अत्यारे भरी ने आ बाजू डिश में मूके। आपणे तमने आ शरूआत में कीधुं थोड़ीक वार ज पाणी में राखवाना हता परंतु थोड़ोक जाजो टाइम रही गयो एटले थोड़ोक फाटी जाय एटले थोड़ोक कहेवाय के निरायते बोन है निकाळे है। तो फाइनली मित्रों अहीं आपणे तमने बतावी दीधुं जो गुंदा ही भराई गया है ने आपणे थोड़ोक मसालो है ए शाक में एड करवानो तो एटलो आपणे राख्यो है ने लसणनो पेस्ट अने ए बधुं आपणे हवे शाक में एड करशुं। तो फाइनली तमे जोई शको अहीं कणे। तो चालो हवे शाक बनाववानी तैयारी है चालू करिए।
તો જો તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, રાઈ એડ કરી દીધી ને જીરું પણ એડ કરી દઈને પછી આપણે લસણનો પેસ્ટ ને મીઠો લીમડો જો પછી કે બધું આપણે એડ કરી દઈએ પછી આ રીતે હલાવવું પડે આખું તપેલા સહિત ચમચો નાખીને હલાવી તો બધું કે આંગી જાય અંદર એટલે આ રીતે થોડીક વાર હલાવવાનું પછી આપણે જે તમને કીધું તેમાં મસાલો છે તો એમાં થોડુંક અત્યારે આપણે સ્વાદ પ્રમાણે મરચું ને હળદર એડ કરી દઈશું એ સ્વાદ પ્રમાણે ખાતા એ પ્રમાણે બાકી તો મસાલો આપણે તૈયાર કર્યો ત્યારે પણ એડ કર્યું હતું તો જો મસાલા સાથે જ આપણે દહીં પણ એડ કરી દઈએ આપણે ગ્રેવીમાં કે દહીં એડ કરવું છે પાણીની જાજુ એડ નથી કરવું થોડુંક એવું લાગશે થોડુંક કરશું બાકી તો નકર દહીં જ એમ કે જે ચૂલા ઉપર મૂકીને એવું કરશે એટલે પાતળું તો પડી જશે સાસ હોય તો એ ચાલે તો ફાઇનલી મિત્રો આપણું શાક એ બની ગયું ને હવે આપણે તમને વાત કરી તેમ જે જીરા મસાલા છે એ એડ કરી દેવું અને કોથમીર